Hello everyone. So today we are going to discuss about the financial institutions. So the financial institutions in India can be categorized as it can be banks which provide the finance, or it can be NBFC. And this NBFC means that non-banking financial companies. The difference between banks and non-banks is banks accept demand deposits. Demand deposits are those deposits which can be given back on the demands. But if it is time deposit, then it is fixed that the person cannot get the money back until the tenure is completed. So these NBFCs, they do not accept demand deposits. But where in case of banks, we have this facility. Moving on and discussing these type of financial institutions of India. First of all, starting with banks. Banks can be commercial in nature or it can be cooperative. So if the bank is cooperative, then it is for the social welfare. But if it is commercial, then it is for the profit purpose. There are various type of banks in India, as the banks are majorly known by the term that they are universal bank or the differentiated banks. So if it is known by the term universal, it means that all the functionality of the bank is flexible. It means उसको उसके अंदर कोई deposit करने पर कोई restriction नहीं है. बैंक किसी को भी lending कर सकता है, कोई restriction नहीं है. कितना amount किसको lend करना है, कोई restriction नहीं है. बैंक की geographical location के लिए भी कोई restriction नहीं. इट मीन्स कोई भी फंक्शनलिटी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है बैंक के पास, देन इट इज यूनिवर्सल बैंक. बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम बोलते हैं कि बैंक इज डिफरेंशिएटेड, तो डिफरेंशिएटेड का मीनिंग है कि उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन पर, उसकी लैंडिंग पर, डिपॉजिट करने पर अमाउंट, इन सब पर रेस्ट्रिक्शंस है. तो अब हम आते हैं कि कॉमर्शियल बैंक्स के हमारे पास क्या क्या टाइप्स होते हैं. फर्स्ट टाइप वी हैव इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स. पब्लिक सेक्टर बैंक्स हम उन बैंक्स को बोलते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट का 51% शेयर होता है. इट मीन्स गवर्नमेंट का शेयर ज्यादा है, तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं. वी हैव एग्जांपल ऑफ एसबीआई. नेक्स्ट वी हैव इज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. Private sector banks means that the private company has share that is more than 51%. Then it is private sector bank. And let's say next we have is foreign banks. So in case of foreign banks, it means some private company of any foreign country has opened this bank. Next we have is regional rural banks. Regional rural banks were opened with the aim of providing the service to the rural areas. And now coming to the cooperatives. Cooperatives also play a very important role in the economy, as these are opened with the aim of public welfare. So that is why their main aim is not profit. There are various categorizations, and those are state cooperative bank, and we have district level cooperative banks. Then we have primary agriculture and credit societies. These are for supporting the rural society or the agriculture society. Agriculture Credit Society, PACS. Majorly what happens is these cooperative societies are regulated by the state government and also RBI. But these PACS, the Primary Agriculture Credit Society, these are only regulated by the state government, not by RBI. So the aim of these cooperative banks is that these banks help in supporting the rural economy or the agriculture. The direct funding to the agriculture people is given by these primary agriculture credit society,
and which can be refinanced by the district cooperative banks and further refinanced by the state cooperative banks. It means, let us say there is a person P1 who can get the loan for agriculture from this PACS, and later on PACS will refinance its amount from the district cooperative bank, and district cooperative bank will later on refinance it with the state cooperative bank. So ultimately the fund will be given from the state, but directly we can say that this amount is given by the state cooperative banks. So this is the structure of the cooperative banks of India. So we have discussed the banking section of India. Now we are going to see the, and next we have is non-banking financial companies. So non-banking financial companies are those which do not accept the demand deposits. So we have various categorizations under NBFCs also. We have developmental financial institutions. Mental financial institutions. These were started by the government with the aim of supporting those sections which do not have the direct fund from the commercial banks. Let us say एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको इजीली एडिक्वेट अमाउंट में फंड नहीं मिल पा रहा है बैंक से, या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टार्टअप्स को नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हीं सब सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए सो लेट्स से हमारे पास नाबार्ड है. नाबार्ड डायरेक्टली नहीं लोन देगी एग्रीकल्चर सेक्टर को, बट नाबार्ड क्या करेगी, लेट्स से कि किसी बैंक B1 ने एक फार्मर को लोन प्रोवाइड किया है, तो अब जो भी लोन उसने प्रोवाइड किया है बैंक ने, वो जो नाबार्ड है उसको रिफाइनेंस कर देगी. तो अल्टीमेटली वो फाइनेंस कहाँ से हो रहा है, नाबार्ड से हो रहा है. तो ऐसे ही हमारे पास एक्सिम बैंक है. एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में सपोर्ट करता है, सेम रिफाइनेंस करेगा. देन वी हैव सिडबी. सिडबी इज फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज. स्मॉल इंडस्ट्रीज के कोई भी लॉन्स होंगे उनको ये सपोर्ट करेंगे. देन वी हैव नेशनल हाउसिंग बैंक. नेशनल हाउसिंग बैंक कोई भी हाउसिंग सेक्टर के को सपोर्ट करेगा. देन वी हैव मुद्रा लॉन्स. मुद्रा इज फॉर द स्टार्टअप्स, फॉर द स्मॉल इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट लॉन प्रोवाइड करती है. इसके अंदर भी ये होता है कि मुद्रा बैंक मुद्रा लॉन्स को रीफाइनेंस कर देता है. एंड काफ़ी केसेस में ये भी होता है कि मुद्रा डायरेक्टली भी लोन प्रोवाइड करता है लोगों को फॉर स्टार्टअप्स, फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज. सो दीज आर द डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और ये सब NBFC के अंडर आती हैं. दीज आर नॉट बैंक्स. नेक्स्ट वी हैव इज, let's say we have credit information companies. So these companies would provide the information about the banking sector and would also fund to the banks if needed. So they will provide the credit history of the persons, what were the details of the person who have taken loan from some bank, what was the history, if he has provided the amount back to the bank or not. So this all information will be provided by these institutions. And we have some NBFCs like who takes the loans from banks and will provide the fund to the society. Let's say we can take the example of ILFS. ILFS is an NBFC. What it has done is it takes loan from banks. It takes loan from these developmental financial institutions, and ultimately what they do is they will provide the fund to various companies and will try to make profits. So ILFS crisis was in news for a very long time because ILFS crisis was done. तो प्रॉब्लम ये था कि लेट्स से कि ILFS के क्राइसिस में प्रॉब्लम था कि किसी पर्टिकुलर बैंक, लेट्स से कि एक्सिस बैंक से ILFS ने एक लोन लिया हुआ है, एंड लोन की ड्यू डेट है मार्च 2022, एंड डेट कंप्लीट होने के बाद ILFS उस अमाउंट को नहीं रिटर्न कर पा रहा है. देन फॉर द टाइम बीइंग किसी एक बॉन्ड का प्रॉब्लम हुआ है, इस बॉन्ड को नहीं रिफंड कर पाया ILFS. लेकिन लेटर ऑन क्या होगा, मार्केट में कुछ ये न्यूज़ होगा कि ILFS क्राइसिस में जा रहा है, ILFS ने अपना बॉन्ड नहीं सबमिट कर पाया. इसकी वजह से कोई और बैंक, लेट से SBI होगा या फिर कोई डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कि नाबार्ड ने लोन दिया हुआ है, नाबार्ड, वो लोग भी बैंक जो बॉन्ड्स होंगे उनको मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर देंगे. मार्केट में सेल करने से ये होगा कि जो ILFS के बॉन्ड्स हैं उनकी डिमांड इतनी कम हो जाएगी कि सब लोग चाहेंगे कि इसको मनी में कन्वर्ट कर लो और
ट्रस्ट बिल्कुल कम हो जाएगा आईएलएफएस से। लेटर ऑन ये सिनेरियो आ जाएगा कि किसी भी एनबीएफसी से भी ट्रस्ट कम होने लगेगा, बिकॉज कि एनबीएफसी क्राइसिस में जा रहे हैं। तो ऐसे एक्शन, ऐसे प्रॉब्लम्स में आरबीआई सिचुएशन को ऐसे डील करती है कि आरबीआई को लग रहा है कि सब बॉन्ड सेल कर रहे हैं मार्केट में, एंड मार्केट में इकोनॉमी में क्या सीन हो गया है कि मनी बहुत ज़्यादा है, मनी ज़्यादा है तो इट मीन्स इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। इस सिचुएशन को डील करने के लिए आरबीआई कुछ मनी को पंप कर देगी इकोनॉमी के अंदर। तो अगर इकोनॉमी में ऑलरेडी मनी ज़्यादा था एंड आरबीआई और मनी को पंप करेगी इकोनॉमी, तो मनी की वैल्यू विल स्टार्ट टू रिड्यूस। तो इसलिए लोगों को लगेगा कि अभी तो मतलब बॉन्ड की वैल्यू भी कम हो रही है एंड मनी की भी कम हो रही है, तो इस वजह से वो बॉन्ड्स को सेल करना रोक देंगे। थोड़ा सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आरबीआई ने ये एक्शन भी लिया था आईएलएफएस क्राइसिस के टाइम पे। सो दिस वाज इट, आईएलएफएस वाज दिस एनबीएफसी जिसमें काफ़ी क्राइसिस देखा गया था। I hope you understand the financial institutions well. Thank you for watching.